डियर फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज आमर रहिबो 6th लर्निंग सेशन ऑन इंग्लिश कंटेंट एंड मेथड जोठी कि आज आम डिस्कशन करबा 20 क्वेश्चंस फ्रॉम कंटेंट एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मेथड। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस रही 30 क्वेश्चंस आम डिस्कशन करबा। तो चलंतु देखिबा वन बाय वन विथ एक्सप्लेनेशन एवं ता पूर्व निश्चय गोटे आपण मानक पाखरे निवेदन रहबो जदि ए पर्यंत मोर चैनल टू आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर अपकमिंग लर्निंग सेशंस। So friends, here is the first question. The aim of teaching English language is to acquire the knowledge of dash. Options are grammar, words and phrases, sentences, language skills. The correct option is option D, language skills. जो एम रहे हमरो केवल जे ग्रामर पाई बा वर्ड्स एंड फ्रेजेस पाई बा सेंटेंस पाई नुहे परंतु टू स्ट्रेंथन द लैंग्वेज स्किल्स. So here the option D is correct. Next question. When I dash him, he was playing chess. Options are C, saw, have seen, had seen. तो हमको ये करेक्ट फॉर्म को पुट करिवार अछि. मु जेतेबेले देखिली से चेस खेलुथिला तो मु देखिली मतलब कौन होबो the option B is correct. When I saw him, he was playing chess. Next question को जिबा. Hemant could not reach the station in time owing to dash. Heavy traffic, lots of traffics, much traffics. Here the correct option is option B, heavy traffic. Hemant could not reach the station in time owing to heavy traffic. Next question. Our constitution recommends English as dash. Options are a compulsory subject in education, a language of admission, an associate official language, a lingua franca. The correct option is option C, an associate official language. Our constitution recommends English as an associate official language. Next question. Formative assessment does not help in dash. Options are identifying the learner's weakness in learning, providing opportunity to the learners to improve their work after getting feedback, enabling teachers to modify teaching learning strategies, enabling learners to secure good marks. The correct option is option D, enabling learners to secure good marks. आमे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करंती फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मोटो रहे कोन जो लर्नर्स रहिचंती तांकर वीकनेस को जानिबा एवं से हिसाब रे हमको स्ट्रेटेजी बनेबार अछि एवं ताको गोटे अपॉर्चुनिटी दबार अछि जेमति कि से इंप्रूव करि परिबे तांकर वर्क रे एवं ता सहित हमर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अछि हमें कोन करि कि पिला को भलरु अति भल करि परिबा तारे ऊपर मोर गुरुत्व रे किंतु एटी सीधा सड़क फॉर्मेटिव असेसमेंट सिक्योर गुड मार्क्स अर्थात अधिक मार्क रखिबारे से सहाय्य करे नाही. So here the correct option is option D. Formative assessment does not help in enabling learners to secure good marks. तो next question को जिबा. Next question. The detailed and careful technique of reading a text is known as dash, skimming, scanning, intensive reading, extensive reading. The detailed and careful technique of reading a text is known as option C, intensive reading. The correct option is option C, intensive reading. जेतबेले डिटेल को हमें जाउछंती और केयरफुली हमें पढुछंती जो टेक्निक रहउची ताको हमें कोन कहउछंती दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी अवॉइड्स डैश देयर. तो करेक्ट फॉर्म कोन रहइबो टू गो, गो, गोइंग, टू गोइंग. टू गोइंग तो हमार प्रश्न उठुनी तो एठी गो मध्ये हबनी and to go मध्ये हबनी. So here the correct option is option C, going. She avoids going there. से सेटा को जिबा अवॉइड करूछ बा जिबा को अवॉइड करूछ तो इट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, going. Next question. Substitution table drills helps the teachers in dash developing pre-writing skills,
evaluating the listening skills, improving fluency of learners, giving controlled language practice. The correct option is option D, giving controlled language practice. ताले substitution table drills जहाँ रोचे giving controlled अर्थात language practice रे से help करे teacher को. Next question, the category wise action verbs list was developed by Dash, B.S. Bloom, RCM approach, Robert Mager, Robert Miller. The correct option is option A, B.S. Bloom. The category wise action verbs list was developed by B.S. Bloom. The next question is, they have been studying Dash, had all day at home, all day had at home, had all day, had at home all day. The correct option is option D. They have been studying hard at home all day. Studying hard at home all day. ताने किपरि फर्स्ट आसला हाउ, नेक्स्ट आसला होयार एवं तापर आसला टाइम, जोटा कि हमर एडवर्ब रो जो सीक्वेंस रहउची बा ऑर्डर रहउची से ऑर्डर हिसाब रे जदि आमे ताको खंजुचंती ताले हमर एटी करेक्ट फॉर्म होबो हार्ड एट होम ऑल डे. दे हैव बीन स्टडीइंग हार्ड एट होम ऑल डे. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 11, लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इंपोर्टेंट बिकॉज. The options are, it is taught in all English medium schools, it is the language of our powerful colonizers, it is a foreign language, it is a link language in a multilingual country. The correct option is option D, it is a link language in a multilingual country. आपण माने सब जानि छथि भारत वर्ष होछि विभिन्न भाषार देश, जोतरे कि आमे कोन करंती प्राय तो हिंदी और इंग्लिश को व्यवहार करती जितेबाला आम इंटरस्टेट कम्युनिकेशन करती गोटे स्टेट रु अलग गोटे स्टेट को जाती आम हिंदी भाषाभाषी अंचल को जदि जाऊँगी हिंदी कहवाई चेष्टा करती से आमर कम्युनिकेशन को ब्रिज करने चाहती. किंतु इवन आपड़ जदि साउथ पार्ट को जाऊँच भारत रो तो सेठी से हिंदी बुझती ना. सो वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. तो ये गोटे लिंक लैंग्वेज हिसाब से आमर इंग्लिश को आम व्यवहार करते. So here the correct option is option D. Learning English in India is important because it is a link language in a multilingual country. The next question is, Hema told me dash story. A fantastic ghost, incredible, a fantastic incredible ghost, an incredible fantastic ghost, an incredible ghost fantastic. तो ये देखो आपंकर जो रहा एडजेक्टिव जो ऑर्डर रोचे से ऑर्डर को आम ये यूज कर. तो फास्ट आमर कौन रही ऑप्शन आपंकर करेक्ट ऑप्शन इज बी. तो प्रथम आपंकर देखो डिटरमिनर आसुची आर्टिकल आसूची ए फैंटास्टिक इनक्रेडिबल घोस्ट. ये पर्टिकुलराइज होची को स्टोरी दैट इज घोस्ट स्टोरी एवं तापर जो फैंटास्टिक एंड इनक्रेडिबल ए दीटा पाखापाखि सामान रही आमर यूजुअली फैंटास्टिक आगु को आसुची. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. हेमा टोल्ड मी ए फैंटास्टिक इनक्रेडिबल घोस्ट स्टोरी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फसाइजेस डैश. द ऑप्शंस आर प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन, टर्म एंड इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रोसेस इवैल्यूएशन. कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जहाँ को सीसी बोली कहती. तो सीसी क्या को एम्फासाइज करे, प्रोसेस इवैल्यूएशन को सी एम्फासाइज करे. केमती ना विशेष करके आम जिते सीसी थ्रो देकी जाती सेतबले आमर कौन हुए मोर पिलार बारंबार बारंबार आम ताको इवैल्यूएट करिवार सुजोग हमको मिले, जहाँ फल कि आमर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रोची ता केते दूर इफेक्टिव होची बा पिला केते रिसीव करूची एवं तार अग्रगति कौन होची ए सब जिनस आम सीसी माध्यम रे जानिबा को पाई था. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोसेस इवैल्यूएशन, जोटा कि विशेष करके हमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बुझाउची. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्फेटिकली इट इज कॉल्ड डैश. पॉज, इंटोनेशन, स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन.
The correct option is option C, stress. When a part of the word is spoken emphatically, जेतबेले आमे गोटिए वर्ड ऊपर स्ट्रेस दउचंती बा ताको emphatically कहउचंती तो तार अर्थ कोन, इट इज कॉल्ड स्ट्रेस. So the correct option is option C, stress. Next question, he was ashamed dash his misbehavior with, for, of, in. जो चारिटी प्रिपोजिशन हमको देछि तो तार भितरु आमे काहा को यूज करबा, which is more accurate. Here the correct option is option C, of. एट देखंतु, he was ashamed of his misbehavior. ashamed of सीधा सड़क गोटे फ्रेजाल वर्ब जार अर्थ लज्जित हवा बा लज्जित बोध करबा. he was ashamed of his misbehavior. So here the correct option is option C, ashamed of. Next question, neither of the boys dash a bike. Has got, was got, have got, has been got. Here the correct option is option A, has got. Neither of the boys has got a bike. Neither of the boys कहले एठी हमर जो सब्जेक्ट रहउची सब्जेक्ट सिंगुलर को सूचउची, तेणु एठी has got हब, have got हबनी, has been got हबनी, तो एठी हमर आसबो the correct option is option A, has got. Next question, he gave me dash 1 rupee note. आर्टिकल कौन रही एठी हम देखिबा बा कौन वर्ड एठी हमर लागिबो, an, a, the, many. Here the correct option is option B, A. He gave me a 1 rupee note. He gave me a 1 rupee note. Here the correct option is option B. Next question, he has been ill dash Monday last. The options are to, since, in, for. The correct option is option B, since. He has been ill since Monday last. Since Monday last. Monday last कहले एटे पर्टिकुलर गोटे टाइम को बुझुची बा सेही टाइम रु इल अछि. जदि गोटे ड्यूरेशन को बुझौ थांदा ताले एटे कोन लागि थांदा, फॉर लागि थांदा. किंतु एठी एक्जेक्टली गोटे डेट को बुझौची जो डेट रु से इल अछि बोली सुचौची, मंडे लास्ट. He has been ill since Monday last. So the correct option is option B. Next question, when in a specific situation rules are applied, we call the method dash. The options are deductive, incidental, inductive, correlative. The correct option is option A, deductive. When in a specific situation rules are applied, जेतବେଳେ कोनोसी निर्दिष्ट सिचुएशन ले विभिन्न प्रकार रूल सब अप्लाई करा जाए सेतବେଳେ ताको हमें से मेथड को कोन कहते, दैट मेथड इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड. सो द ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, there should be a word bank in every primary school because it helps build up dash. Options are conception, vocabulary, writing skill, reading readiness. The correct option is option B, vocabulary. There should be a word bank in every primary school because it helps build up vocabulary. Word रे कथा आसला माने इट vocabulary को सूचौछि. जदि word bank रहिछि ताले निश्चित vocabulary skill को डेवलप करिबारे बा बिल्ट अप करिबारे से सहायता करिवो. So here the correct option is option B, vocabulary. Next question, here is a passage and passage को हमें पढ़िबा भलो भाबरे एवं एठी रहिछि 21 रु 25 नंबर पर्यंत जो क्वेश्चंस रहिछि ए पैसेज अनुसार हम ताको अटेंड करबा. तो पैसेज रु आपनकर 10 मार्क्स रो आसुछि क्वेश्चन एवं पैसेज को जदि आपण माइंडफुली पढिले ताले निश्चित 10 रु 10 रखिबाटा सारा. तेनु इंग्लिश रे आपनकर 10 मार्क पक्का बोली आपण जानि न ता डिपेंड करछि आपनकर रीडिंग ऊपर, कना पैसेज को बिलोंग करछि से क्वेश्चन. तेनु पैसेज को ठीक ढंग रे आपण पढिछथि जदि निश्चित से क्वेश्चन ला आंसर देई परिबे. तो चलंतु पैसेज कोन देछि पढिबा एवं से हिसाब रे 21 नंबर रु 25 नंबर पर्यंत क्वेश्चन को अटेंड करबा. The bulk of our population is poor and illiterate. Adult education poses a lot of problems. On the one hand, there is shortage of teachers for adult education, and on the other hand, the adults feel shy of starting to learn at a late age. Moreover, as most of the villagers are farmers, and the job of a farmer is very strenuous,
An adult villager has little time to spare for attending classes. In addition, he finds that what is taught at adult centers of education has no bearing on his daily needs. Therefore, he is not interested in it. It is necessary to make adult education more meaningful for farmers in the villages. It should be made useful and work best to arouse the interest of the adult villagers. The teachers should adopt a system of education in which earning and learning go together. Efforts to enhance adult education will ultimately discourage the need to migrate to towns for better earning. So here is the first question according to the passage. What poses a problem for adult education? The first option is illiteracy, poverty, shortage of teachers, village environment. Exactly as per the passage, the correct option is option C, shortage of teachers. What poses a problem for adult education? The correct option is option C, shortage of teachers poses a problem for adult education. Next question, how is the job of a farmer? Pleasant, strenuous, delightful, easy. देखो ये जो चारिटा वर्ड रही प्लीजेंट डिलाइटफुल एंड इजी ये सब से प्लीजेंट वे को बुझाऊँ बा जोटी कि आपनकर आनंददायी रहे बट हियर द ऑप्शन बी स्ट्रेनस जोटा कि डिफिकल्टीज फुल ऑफ डिफिकल्टीज तो गोटे फार्मर रो जॉब निश्चित भाव में फुल ऑफ डिफिकल्टीज बा विभिन्न प्रकार कष्ट परिपूर्ण तार जॉब होता है नॉट प्लीजेंट or not delightful or not easy. So here the correct option is option B strenuous एवं strenuous शब्दटी सीधासळख मध्य आपनकर पैसेज रे रहिछि. Next question, what do the village people find about the education given at the adult centers? The education is costly, learning is difficult, learning is not interesting, the education has no bearing on their daily needs. Here the correct option is option D. The education has no bearing on their daily needs. What do the village people find about the education given at the adult centers? Adult center रे जो education provide करा होची सेटा को village people केमिति देखुचंती बा सेतरु कोन पाउचन सेमान से लक्ष्य करूचंती तो education has no bearing on their daily needs. ताकर जो daily needs रहउची ता ऊपरे बेस करकी ये नाही. So the education has no bearing on their daily needs. Next question, how can adult education be made more meaningful for farmers? The options are it should be useful and work best, it should be cheap, it should not be strenuous, it should be enjoyable. The correct option is option A, it should be useful and work best. जोटा कि तांको मानक पई यूजफुल होतबो एवं तांको काम अनुଯାयी होतबो तांकर वर्क बेस्ड होतबो ताहाले जाय कि हमर कोन हे परबो ना adult education meaningful हे परबो. So here the correct option is option A. Next question and the last question from the passage. The word bearing in the passage is dash, an adjective, an adverb, a noun, a verb. Here the correct option is option C, a noun. तो ये जो word bearing यूज है गोटे नाउन हिसाब रे ताको यूज करा है. तो एठी सरिला हमरो पैसेज को नै कि जो क्वेश्चन थिला 21 रु 25. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखंतु हियर इज द अनदर पैसेज जोटा कि हमरो सेकंड पैसेज रहउची ए लर्निंग सेशन ले एवं आपनकर मध्य दुईटी पैसेज पडिबो हमें जेमति कि आलोचना करथुले. तो ये सेकंड पैसेज को हमें वर्तमान जिबा एवं ताकू नै कि जो 26 रु 30 पर्यंत क्वेश्चंस रहिछि ताकू मध्य हमें डिस्कशन करिबा. So let's read the passage carefully. Yet another great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. Science, as we have seen, has given us powers fit for gods, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines, as I have already explained, we are made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. Already,
most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with, and must be kept at the right temperature. And if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work, or brushed with rake and blow up and spread ruin and destruction all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us together, just as we rule the animals. ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାସେଜ ଟେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ତା ଥୀମ ବି ଯୋଉ ରହୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଥୀମ ରହିଛି। ତ କେମିତି ମଣିଷ ବା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଏବଂ ତା ସହିତ ମେସିନ को एटी कंपेयर कराई कौ भली भाव मेसीन बर्तमान को रूल करने को आरंभ कलानी एवं मेसीन को कौन कौन दरकार अच्छी जदि आम से जिनस को प्रोवाइड करूना सी केमती तार टेम्पर हरोची एवं केमती ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने को पछौ ना। तो चलतु जो क्वेश्चंस रही 26 रु 30 पर्यंत आम डिस्कसन करवा वन बाय वन। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम 26 टू 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, Dash does not know what to do with its knowledge. The options are science, man, machine, our civilization. Here the correct option is option D, our civilization. Our civilization does not know what to do with its knowledge. The next question, the machines according to the writer are in a fair way to become man's master because of his dash. Too much dependence on them, knowledge with which he manages machine, faith in the powers of the machines, too little dependence on them. Here the correct option is option A, too much dependence on them. ताले बहुत जल्दी से हमर मास्टर होबा को जाउची, तार कारण कोन ना हमर धीरे धीरे ता प्रति जो डिपेंडेंस रहउची सेटा बहुत परिमाण रे बड़ी बड़ी का जाउची। The next question, machines must be given dash to wash with, petrol, coal, oil, right temperature. The correct option is option C, oil. Machines must be given oil to wash with. Next question, according to the writer, the machines must get their meals when they dash them. Demand, expect, want, usual get. Here the correct option is option B, expect. सीधा सड़क एक वाटी आपणकर पैसेज रे ही रही जते से एक्सपेक्ट करूछंती तांको मेल दबार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ब्लो अप इन द पैसेज मीन्स डैश, टू डिस्ट्रॉय, टू लॉस टेम्पर, टू वार्न, टू स्टॉप बर्निंग। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टू लॉस टेम्पर। जदि हमर जो तांकर जो भली भाबरे मेंटेनेंस रही बा तांको फूड जोगे दबार अछि बा पेट्रोल भरिबार अछि, सफा करिबार अछि, ए सब जिंस जदि आमे ठीक ढंग रे न करूचंती ताले ब्लो अप हिजिवो। कोन हिजिवो? ब्लो अप। तो ब्लो अप रो इटिमन मतलब कोन ना टू लॉस टेम्पर। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टू लॉस टेम्पर। तो ये थिला हमरो 30 क्वेश्चंस जोटा कि आमे डिस्कशन कले, 20 फ्रॉम कंटेंट एरिया एंड 10 फ्रॉम पेडागोजी। इंग्लिश रो थिला 6th लर्निंग सेशन थिला। तो पुणी थरे निवेदन करिवे जदि आपन को वीडियोटी भलो लागि थाए तो निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन ऊपर क्लिक करनेबे जेमि फर्स्ट वीडियो रो अपडेट आपन पाखरे पहुंची जो। सो पुणी आपन मानक सहित देखा हबो आ गुटे नुवा लर्निंग सेशन सहित। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ।